Hello students, I hope you all are fine at your home. Today I came up with another video on solid state that is all about face centered cubic crystal system. In this session we will discuss the Z effective, the coordination number, packing efficiency, density and everything about the FCC crystal. So let's start with the cubic system. This is a cubic system shown here. In this cubic system, there will be, in FCC means face centered, there will be atoms at the corners. So let us make atoms at the corners. These are the atoms at the corners and there are 8 corners. Then let us make atoms at the face centers. So there are 6 face centers. So this is one face center, second, third, then this is top, bottom, then front, and this is back. So there are 6 face centered atoms and there are 8 atoms at the corners of the unit cell. Now how many lattice points are there? Let us first write the number of lattice points. Number of lattice points in FCC is equal to 8 at corners plus 6 at face centers. Total how many lattice points are there? 14. Now let us calculate Z effective for this. Now what is Z effective? Z effective is number of atoms per unit cell. Now as you know, if there is an atom at the corner, then this whole atom, atoms are treated as hard spheres. So these are hard spheres, and if you keep a sphere at the corner of a cube, the whole of the sphere will not belong to that cube. So you can understand it by this. Suppose we have 4 rooms at the ground floor. These are 4 rooms at the ground floor and there are 4 rooms above this. Same at the top of these 4 rooms there are other 4 rooms on the first floor. Now if you keep a sphere at this corner, then this sphere will be shared between these 4 rooms at the ground floor and the 4 rooms at the first floor. So what will be the contribution? 1 by 8. So any atom that is present at the corner, only 1/8 part is present in that particular unit cell, so its contribution is 1 by 8. Any atom that is present at the face center, see this is one face and this face can be shared only with one other unit cell. तो 2 यूनिट सेल के बीच में एक फेस शेयर हो सकता है. So the contribution of this face centered atom will be half. You can say that this is a wall and this wall, the center of this wall may be shared only between 2 rooms. So the contribution will be 1 by 2. So now you can calculate the number of atoms per unit cell. 8 atoms are there at the corners. Contribution is 1 by 8 plus 6 atoms are there at the face center and their contribution is half. So total number of atoms per unit cell will be 4. मतलब अगर 4 एक sphere ले रहे हो, so 4 such spheres will be present in one unit cell. I hope is it clear. So Z effective is 4 for FCC crystal. Now let us calculate the relation between edge length A and radius R. Clear? Now what is the relation between? Now see, in this face centered atoms, all the atoms at the corners and the face center may be same, or the atoms present at the corners and the face center may be different. Corners पे same atoms होंगे, face center पे दूसरे atoms present होंगे. Generally cations may be present at the face centers and anions are present at the corners, or all the atoms may be same. So depending upon this there are 2 cases. So we will discuss the first case when all the atoms are same. So first case is when all atoms are same. What will be the relation between edge length and radius? See, now take this one. We have taken this distance, okay. Now this is known as face diagonal. See, face
ये अगर एक फेस है, दिस इज वन फेस, then this line which joins the opposite corners of a face, it is known as face diagonal. This is face diagonal. And how many faces are there? There are 6 faces, so there will be 2 on each face, so there will be 12 face diagonals. Now here, if we take a b distance, then along a face diagonal 3 atoms will be present. See, if we take this distance, this atom, then the atom at the center, and this corner atom is present. So how they are present? This is one face diagonal. There is a atom at the center. The one atom is present at this corner, another atom is present at this corner. Now these 3 atoms are touching each other. So what is the essential condition for a face centered cubic system? The 3 atoms present on face diagonal touch each other. They will touch each other. Okay, now let us take this distance as A, B and C. Clear? Now we have to calculate here AB. So AB square will be equal to, taking the Pythagoras theorem, AB square will be equal to AC square plus BC square. Clear? Now AC, what is AC? This is edge length A, and BC is also edge length A. So it will be A square plus A square, or it becomes 2A square. So AB is equal to root 2A. So this face diagonal, the distance is root 2A. Clear? Now how can you write this distance between point A and B in terms of R? This is 2R, this is R, this is R. So total distance is 4R. So 4R is equal to root 2A, or we can write R is equal to root 2A by 4, or it becomes A by 2 root 2. So this is the relation between radius and edge length. Radius is equal to edge length A upon 2 root 2. The second case is when atoms at corners and face centers are different. Corners पे और face center पे अगर atoms different, and then what will be the relation? So same way you can write here. See, this is edge length, this is face diagonal. Suppose anion is present here, so this is one anion. There will be a cation or another atom present here, and this is another anion. So it, suppose its radius is r minus, this radius is r minus, so it will be equal to 2r plus. This is cation and these are anions. So they will touch each other along the face diagonal. So we can write it is 2r minus plus 2r plus is equal to the same distance, it will come out to be root 2a. So we can write r minus plus r plus is equal to root 2a upon 2, or it becomes a by root 2. So we have found the relation between this distance, means the center, and this distance. This distance will be equal to a by 2 root 2. So r minus plus r plus will be equal to a upon 2 root 2. So relation between edge length a and radius r is a is equal to 2 root 2 r. If all the atoms are same, if the atoms are different, you have cations and anions present at the face center and the corners. So you can write this relation in this way. Now let us talk about the coordination number. The coordination number is the nearest numbers or nearest neighbors of a particle. That means if there is a given atom, एक particular atom है, उस atom को कितने particles directly contact में है और कितने touch कर रहे हैं, that is known as its coordination number. Now let us calculate the coordination number of FCC crystal. See here, this is a expanded view. ये एक expanded view है, means the atoms that does not exist in such way in a crystal. They actually touch each other, or they are closer, much closer to each other. So we have just shown them by straight line, joining by straight line to make the crystal easier to learn. But actually what happens, these
particles are actually touching each other. Now this is first layer. Now I am making the particles here. So there is a particle at the face center. So this is the face center particle, and I am making the corner particles by green color. So these are the corner particles, and these corner particles do not touch each other. तो ये एक दूसरे को टच नहीं करते. So the particles at corners, you have to remember this, do not touch each other. जबकि सिंपल क्यूबिक में ये टच करते हैं, do not touch each other, but they touch the face center particle at face center. तो फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है उसे टच करेंगे, बट वो एक दूसरे को आपस में टच नहीं करेंगे. क्लियर? तो ये होगी, सपोज दिस इज एटम 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. सो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज एटम 5. Now second layer is this one. See, I am making it with the red color so that it becomes clear to you. This is the second layer. Okay, and how this second layer is placed? This atom in this way, then this atom, then this one and this one. So I am marking them. Just see how I have marked the 5. This is 6 7 8 9. So this is 6 7 8 9, and these 4 particles are kept over these 5 particles. तो ये जो 5th particle था, ये इन 4 spheres के बीच में है. It is present and it is touching these 4 particles at the corner, and these 4 spheres will come over these 5 spheres, and these 4 spheres will touch this given particle at the face center. तो ये 4 particles जो है या 4 atoms जो है, ये इस face centered atom को touch करेंगे. Now coming to the last layer is 8, this is 9 10 11 12 13 and 14. So again we can make it like this. एक face center में है and the 4 particles are present at the corners. So these are the 3 layers. Now can you find out what is the coordination number of any face centered particle? Suppose we talk about this face centered particle. तो इसे कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? या फिर इफ वी टॉक अबाउट दिस पार्टिकल, से दिस पार्टिकल वी हैव टेकन दिस पार्टिकल्स, से दिस पार्टिकल, दिस वन. सो दिस फेस सेंटर्ड पार्टिकल और दिस विल टच हाउ मेनी पार्टिकल्स? तो एक तो टच कर रहा है 4 को, 4 कॉर्नर पार्टिकल्स अपनी लेयर में. देन दिस 4 पार्टिकल्स, दिस लेयर it is touching these 4 particles. So 4 plus 4, ऐसा यूनिट सेल ऊपर भी होगा, there will be unit cell above this unit cell, and there will be 4 particles at the face center over this. So total coordination number or total number of particles it will touch is 12. I hope it is clear now. तो अगर तुम कोई सा भी पार्टिकल सेलेक्ट करते हो फेस सेंटर में, तो एक तो वो 4 कॉर्नर पार्टिकल्स को टच करेगा अपनी लेयर में, 4 कॉर्नर पार्टिकल्स को, 4 particles which are present at the face center below it, and 4 particles which are present above it in another unit cell. So total coordination number is 12. Now हमने किसका फाइंड किया? फेस सेंटर पार्टिकल का. सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर द कॉर्नर पार्टिकल. अगर कोई कॉर्नर पे पार्टिकल है, से वी टेक दिस पार्टिकल हियर, दिस इज ए पार्टिकल एट द कॉर्नर, तो ये कॉर्नर पार्टिकल कितने फेसेस को टच करेगा, देन इट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये कॉर्नर पार्टिकल है, सी एक ही क्यूब में, दिस इज 1 क्यूब, ये कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है? आई विल शो विद द रेड कलर हियर. ये इस फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा. क्लियर? ये इस फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा, एंड द फेस एट द बैक, ये इस फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा. ठीक है? तो एक क्यूब में ये 3 पार्टिकल्स को टच कर रहा है. नाउ देयर इज अनदर क्यूब दिस साइड. इस क्यूब में एक इस फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा, और एक बैक साइड जो फेस है उसके फेस सेंटर पार्टिकल को टच करेगा. तो इन 2 क्यूब्स इट इज टचिंग 5 पार्टिकल्स. अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो 8 में डिवाइड होता है एक एटम. द एटम दैट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स.
So if it is touching 3 particle, you will calculate it will touch 24 particles, but that is not the case. This corner particle in 2 unit cell, it is touching 5 particles, क्योंकि एक फेस दोनों के बीच में कॉमन है. So in this way you can find out how many faces it will touch. तो अगर इसी के ऊपर एक और बनाते हो, तुम 2 यूनिट सेल्स और कंस्ट्रक्ट करते हो. सी, आई एम कंस्ट्रक्टिंग हेयर, ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट. सो यू हैव, एक ये हो जाएगा, ठीक है, और इन दिस वे यू विल गेट वन मोर क्यूब हियर, एंड सिमिलरली इन दिस वे. ठीक है, तो बॉटम में ये 2 यूनिट सेल को टच कर रहा था 5 पार्टिकल्स को. सिमिलरली हियर इट विल टच, ये फेस तो कॉमन हो गया दोनों क्यूब्स के बीच में, इन दोनों क्यूब के फेस में ये वाला फेस कॉमन है, तो एक फेस एक पार्टिकल को टच करेगा ये पीछे वाले फेस पे और एक इस वाले फेस पे. सिमिलरली हियर इट विल टच दिस बैक पार्टिकल, और एक ये फेस कॉमन हो गया, ये फेस भी कॉमन हो गया, तो इसमें कितने पार्टिकल्स को टच कर रहे हैं? 3 पार्टिकल्स को. सो इफ यू कैलकुलेट दिस होल यू विल गेट द 12 फेसेस. सो ईच कॉर्नर पार्टिकल, ईच कॉर्नर एटम will touch 12 faces, therefore coordination number will be 12. तो अगर सारे एटम सेम हैं और एक एटम का तुम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, हियर यू हैव कैलकुलेटेड टू बी 12, तो किसी भी एटम का कैलकुलेट करो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. Coordination number is the number of nearest neighbors. Now let us try to find out the number of next nearest neighbors and next to next nearest neighbors. Now nearest neighbors we have just calculated. The nearest neighbors is the coordination number of any atom. Suppose we take this corner atom, इस corner atom को लेते हैं, इसके nearest neighbors कितने होंगे जो face centers पे present होंगे, and that is they are present at the face centers पे प्रेजेंट होंगे, एंड द डिस्टेंस इज, सी इफ वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यहाँ पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है सेंटर में, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना था? द टोटल डिस्टेंस वाज √2a. सो व्हाट इज द हाफ डिस्टेंस? दिस इज a by √2, और यू कैन राइट इट √2a by 2, और इट बिकम्स a by √2. And how many nearest neighbors are there? We have just calculated the coordination number 12. ठीक है, हमने कॉर्नर के लिए भी फाइंड किया था, हमने फेस सेंटर के लिए भी फाइंड किया था. नाउ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, व्हाट डू यू थिंक? सी दिस डिस्टेंस इज a, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस. सो एक पर्टिकुलर कॉर्नर एटम है, वो कितने एटम्स को a डिस्टेंस पे टच कर रहा है? 1, 2 and 3. इसी तरह इधर टच करेगा, इधर यूनिट सेल में, देन अबव एंड देन बिहाइंड द कॉर्नर्स. तो कितने, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स विल बी प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस a, and how many will be there? 3 in 1, so there will be 6 corner atoms, so the number will be 6. So next nearest neighbors or second nearest neighbors of any particle is the next atoms at the closest distance. So it is present at distance a and the number is 6. Now this is the second nearest neighbors. Now let us calculate next to next or third nearest neighbors. तो थर्ड नियरेस्ट नेबर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट पार्टिकल विच विल बी प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस नेक्स्ट टू ए. तो let us suppose this face center particle, and we calculate the distance of this corner from this face center particle. ये distance कितना होगा? We are calculating this distance and then we will see whether this is the third closest neighbor or not. तो अगर ये distance calculate, see we will take A, B and C. So what is AC? I will solve here. What is AC? AC है, it is a by √2. क्लियर?
तो ए बी क्या हो जाएगा, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी कितना है, दिस इज पैरेलल लाइन टचिंग द टॉप फेस एंड द बॉटम फेस, तो ये एज लेंथ के बराबर हो जाएगी, दिस इज एज लेंथ ए, तो ये ए बी सी हो जाएगा ए, देन ए सी इज ए बाई √2 का स्क्वायर, सो इट विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इट बिकम्स √3/2a। सो ए बी इज इक्वल टू, दिस इज ए बी, सो ए बी आया √3/2a, और ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, दिस इज √2a, सो इट विल बी लेस देन दिस, so next to next nearest neighbors will be present at the distance of √3/2a, and how many will be there, the number will be 24. Now I will tell you the trick how to find this number of particles, but first understand the third next nearest neighbors of in a FCC system will be present at the distance of √3/2a, and the number will be 24. I hope it is clear. We have calculated this distance. ये corner particle था, जिन 3 फेसेस को वो टच कर रहा है उन्हें छोड़ दो, मीन्स कौन कौन से फेसेस को टच कर रहा था ये, लेट अस मेक बाय दिस, एक इस फेस को टच कर रहा था, एक ऊपर के फेस को और एक पीछे के फेस को टच कर रहा था, उसे छोड़ दो, बाकी के 3 फेसेस लो, ये वाला फेस लिया हमने, ये वाला फेस लिया और नीचे वाला फेस लिया, ठीक है। इसके फेस सेंटर में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, अगर उससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा √3/2a। आई हैव कैलकुलेटेड हियर, ये जो डिस्टेंस होगा ये टॉप फेस और बॉटम फेस को टच कर रहा है, तो ये एज लेंथ के बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a, दिस इज डिस्टेंस इज a/√2 एंड वी हैव कैलकुलेटेड a b हियर, so this is the next to next nearest is. If you calculate the fourth nearest neighbor, it will be present at √2a. So I will tell you the trick. The trick is, if any particle is present at, this is the trick, if any particle is present in a multiple of a, like a 2a 3a, इस तरह से अगर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है इन ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ a, then the coordination number will be 6, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है इन हैविंग अ टर्म √2, जैसे √2a या a/√2 या 3√2, अगर इस तरह से कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है जिसमें √2 टर्म्स आ रहा है, इट में भी 10 और 100 कुछ भी हो सकता है, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12. इफ़ एनी पार्टिकल इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस हैविंग अ टर्म √3 आ रहा है उसमें, √3 या a/√3 और 10√3a, इस तरह से जिसमें √3 टर्म आ रहा है, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8. एंड इफ एनी पार्टिकल इज देयर हैविंग एनी अदर टर्म देन दिस, लाइक ऐसे है √3/2a और यू हैव √11/√2a, कुछ भी और टर्म है इन तीनों के अलावा, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 24. So we have done on the basis of this. Let me show you. We have calculated this distance. इसमें √2 टर्म था तो ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, a था तो 6 है, एंड √3/2a था तो ये 24 है. So in this way you can directly use the coordination number without going into the details. Now let us next calculate the packing fraction. What is packing fraction? The fraction of the total volume of the cube that is occupied by the atoms. So if we have a unit cell, एक यूनिट सेल है, ठीक है, एक यूनिट सेल है, से सपोज दिस इज अ यूनिट सेल, वी हैव अ यूनिट सेल लाइक दिस. इसमें एटम्स का जो वॉल्यूम है, they will not occupy the whole volume of this unit cell. Volume of the unit cell will be a cube if a is the edge length, but सारा volume atoms occupy नहीं करेंगे, there will be spaces between the particles, so they will not occupy whole of the space. So whatever is the fraction of the volume that is occupied by the atoms, that is known as packing fraction, and packing efficiency is equal to packing fraction into 100.
Now let us calculate what is packing fraction. Packing fraction होगा volume occupied by the atoms upon volume of the cube. Clear? Now what is the volume of one atom? Volume of one atom is 4/3 pi r cube. What is the number of atoms present here? Number of atoms per unit cell, that is Z effective. So we will multiply by the Z effective. Number of atoms, एक atom, the volume of one atom is 4/3 pi r cube, and number of atoms per unit cell is equal to Z effective, and volume of the cube is A cube. So Z effective in case of phase center, it is equal to 4 into 4/3 pi r cube upon A cube. Now there are two variables here, R and A, so we will put A in terms of R. तो ये जाएगा 4 into 4/3 pi r cube. A को R के टर्म्स में लिखेंगे तो A will be equal to 2√2R क्यूब कर देंगे, and the value will come out to be 0.74. So what will be the, this is packing fraction 0.74. So what will be the packing efficiency? Will be equal to 0.74 into 100. That is 74% of the total space of this unit cell will be occupied by the atoms. This is the packing efficiency. Now in case you have different atoms at the face center and the corners, you can also find out how you will find out. In that case, packing fraction will be equal to number of anions, negative ions, into 4/3 pi r cube plus number of cations into 4/3 pi r cube upon volume of the cube is A cube. Now number of ions, suppose if anions will be present at the corners and cations will be present at the face center. So how many corners atoms will be present per unit cell? 1. नंबर ऑफ anions कितने हो जाएंगे? 8 into 1/8. इट विल बी 8 into 1/8. कॉर्नर्स भी प्रेजेंट होंगे, कंट्रीब्यूशन इज 1/8, तो 1 हो जाएगा 1 into 4/3 pi r cube, pi r minus cube, रेडियस ऑफ द नेगेटिव आयन, प्लस नंबर ऑफ केटायंस फेस सेंटर पे कितने पार्टिकल्स आएंगे पर यूनिट सेल? 3, एंड इंटू 4/3 pi r plus का cube upon A cube. Use this relation, you will get the packing fraction if the number of if the atoms present at the corners and the face centers are different. So generally we use this formula, and generally the atoms at the corners and the face centers are same, and we are asked to do so in this way. Last, we can also calculate the density here. If we asked to calculate the density क्या हो जाएगी? Density is equal to Z into M upon A cube into an A, Avogadro number. Z effective for face centered is 4. Mass number, atom, the molar mass will be given to you, H length will be given to you, and Avogadro number is 6 into 10 power 23. So you can calculate the density of a face centered using this formula. So we have discussed everything about face centered. I hope it is clear to you. If you like the video, please do share, subscribe it. Thank you.